Hello everyone and welcome back to another video. In this video, we are going to cover modal verbs in detail with the rules, with uses and with some examples of each and every modal verb. Right? So let's go ahead. Number one, can. Can expresses your ability to do something, your capability or your power to do something. For example, I can check your pulse. आपने अक्सर बेशतर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? क्या आप प्लीज वो सॉल्ट वहां पे पड़ा हुआ है, नमक रखा हुआ है, प्लीज ये पास कर सकते हैं? सो इफ यू कैन, so you can pass the salt and you say that yes I can pass salt to you, or I can, simply आप ये कहते थे yes I can. Number two is the suggestion or option. Whenever you give some suggestion or whenever you are giving options, you can try this one or you can try this one. Both will look good on you. I think you can go for that or you can buy that. ये वाला ले लो या तो फिर वो वाला सूट ले लो, दोनों ही अच्छे लगेंगे आपके ऊपर. But पैसे नहीं है, so एक ही लीजिए please. Right, that's it. You cannot offer this kind of generosity to anyone. So number third is the impossibility. डिजिट्स वाले कभी मल्टीप्लिकेशंस करें आपने, जिसमें टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है हमें, तो हम सेकंड स्टेप में जब आते हैं और जब फाइनल आंसर हमारा आने वाला होता है वहां पे आप प्लस करते हैं. राइट, वहां पे आप माइनस नहीं कर सकते, जबकि आप डिवाइड में माइनस कर रहे होते हैं. तो अगर कोई माइनस कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वहां पे आप ये कह सकते हैं इम्पॉसिबल. नो 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 नो, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू कैन नॉट डू लाइक दिस. मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमेशा प्लस करते हैं टू गेट अ फाइनल आंसर. So it can't be like this. So she can't be her. She's tall, and the girl you are talking about, she's of the same height to you, right? So she can't be her. वो ये हो ही नहीं सकती. That's impossibility. Then we have the request. But in request sense, can को हम बहुत ही ज़्यादा कम use कर रहे होते हैं. Not in such way. Can you help me please? और आपने अक्सर बेशतर सुना होगा whenever you enter into any boutique or whenever you enter into any shop. So there's a person who is standing at the door and he says you, how can I help you sir? Like that, right? So how can I help you? क्या कैसे मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? Or we can say, can you help me please? Or can you please do it for me? Can you please do my assignment? Or can you please make a presentation for me? Right? So these are the called as request and we use can for this. Number two we have could. आई वुड से कि कैन की जो सेकंड फॉर्म है वो कुड है, क्योंकि ये आपके पास्ट एबिलिटी को शो करता है. एक्सप्रेसेस योर पास्ट एबिलिटी टू डू समथिंग. आई कुड प्ले हॉकी 3 years ago, but now I cannot play. मैं 3 साल पहले हॉकी खेल सकता था लेकिन अब मैं नहीं खेल सकता. अक्सर बेशतर आपने सीनियर सिटीजन्स को बोलते हुए सुना होगा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, वी कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट? सो आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज यंग, राइट, बट नाउ आई कैन नॉट प्ले. और आई कुड रन 4 kilometers a day, बट नाउ आई कैन barely walk. अब तो मैं सिर्फ चल ही लूँ तो काफी है मेरे लिए, राइट? सो दैट्स कॉल्ड could. The use of could shows your past ability. Then you have the polite request or the polite question. Could I call you please? Could you please do me a favor? Could you please sit over there rather than this? So these are called as a very polite question you're asking to someone, right? Very amazing, isn't it? And then we have the possibility, impossibility about the past. She could do it, but she didn't do it. वो ये कर सकती थी लेकिन इसने किया ही नहीं. I don't know why. She could do that, but she didn't do it. Right? So it shows your past ability. The possibility about your past, or you could have called me. आप मुझे बुला लेते, but आपने बुलाया ही नहीं. You could have called me, right? So that's called the past impossibility or possibility. And then we have the suggestion. You could try doing it, or you could doing that, or you could try doing that, such like that, right? And then we have the may. Why do we use may and where do we use may? May is used for the permission. जब भी आप किसी से permission लेते हैं, किसी की इजाजत लेते हैं, so use may. बहुत मर्तबा आपने ये सुना होगा. May I have your attention please? Or may I have your minute? Or may I speak a word?
राइट, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? और मे आई प्लीज कम इन टू द क्लास, और may I go for drinking water, or may I go for the break? You often ask to your teachers, may I go to washroom? All these kind of things. Permission. Possibility and impossibility. Doctor may be late today, so have patience. हो सकता है कि आज डॉक्टर साहब जो है वो लेट हो जाए, so everybody please have your seats and have patience, and if you want to go out so you can, no issue, right? Then we have might. माइट और मे के अंदर क्या फर्क है? मे हम उस वक्त यूज करते हैं, अब ये जरा सुनने वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। मे हम उस वक्त यूज करते हैं जब देयर आर मोर चांसेस समथिंग टू हैपन, जब ज्यादा चांसेस है किसी चीज के होने के। और माइट हम उस वक्त यूज करते हैं जहां पे लेस चांसेस है किसी के होने के, किसी चीज के या किसी काम के होने के। फॉर एग्जाम्पल, it may rain tomorrow, so you must buy or you should buy umbrella for yourself. हो सकता है कि कल बारिश हो जाए, तो इसलिए अभी से umbrella ले लीजिए प्लीज आप, right? And it might rain tomorrow. हो सकता है कि कल बारिश हो भी नहीं सकता. Like there are very less chances of raining. तो बहुत ही कम चांसेस है, वहां पे हम might यूज कर रहे हैं, और जहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर हम may यूज करते हैं. She may go there. Please stop her. राइट, वो जा सकती है वहां पे, सो आप प्लीज उसको रोक लो। शी माइट गो देयर, लेट हर गो, लाइक दैट। आई माइट नॉट ट्रेवल अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, आई मे स्टडी इन पाकिस्तान, सो आई कैन यूज दिस फॉर माई सेल्फ, राइट? देन वी हैव मस्ट। वेयर डू वी यूज मस्ट? मस्ट हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम प्रोबेबिलिटी या तो फिर लॉजिकल assumption को कन्वे कर रहे होते हैं। शी मस्ट बी सिक, she must be sick today. That's why she didn't attend class today. Right? मुमकिना तौर पे वो आज बीमार होगी, यकीनन वो आज बीमार होगी, इसीलिए तो आज क्लास में नहीं आई. Right? Necessity. You must go to doctor right now. You are having angina. You must take it seriously. Go please and check yourself with doctor. And then we have prohibition. बाज़ औक़ात आपने बहुत मर्तबा देखा होगा ये लिखा हुआ, you must not smoke here. In hospital sites or the premises of hospital, you must not smoke there, right? So we use must जहाँ पे unavoidable action हो, यानी कि बिल्कुल भी उस action को avoid नहीं किया जा सकता, लाजमी आपने वो करना है. Whereas we have shall in the next one. We use shall when we are offering something. Shall I make something for you? क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? Or shall I drop you at home? क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? And then we have the confirmation. I shall meet you at ward number 5. But shall surety के लिए use होता है future की, so we rarely use this now. हम ज़्यादातर use नहीं करते. But I और we के साथ आप shall use कर सकते हैं, लेकिन you are not sure about your future, so that's why you cannot use shall every time. Then we have the promises. You shall be the first patient to get checked with the doctor. I'm sure, and I promise you, you shall be the one, right? You shall be the winner. And I know this, I'm 100% sure, right? So you make a promise to someone. Then we have should. Must और should हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसको भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है. हमने कहा था कि हम must वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे unavoidable action हो, बिल्कुल भी उस एक्शन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता. लेकिन शुड जरूरत के तहत तो होता है, लेकिन उसको अवॉइड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंडेशन. यू शुड हायर दिस पर्सन. आपको चाहिए कि आप इस बंदे को हायर कर लें. नहीं भी करेंगे तो कौन सा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ना करें कोई बात नहीं, राइट? अगर मैं आपसे कहूं यू मस्ट हायर दिस पर्सन, इसका मतलब ये है कि आप लाजमी आपने इसको जो है वो इस बंदे को हायर करना है, otherwise you will have some bad situations. The right thing to do or the order, you should complete the given task by today, otherwise you will be in trouble. And then we have the uncertain prediction. You should take umbrella with you because I'm not sure about rain, but you should take, right? So इसमें आप कोई ऐसी चीज नहीं है कि that you are putting something on someone कि लाजमी करना है, but एक suggestion या तो फिर एक recommendation आप दे रहे हैं कि कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं. So video got longer, so we now stop this video over here, 7 tak, and in the third video we'll be having detail about the 2 more modal verbs and some others.
So must watch that video, must watch that video. Right? So see you in the next video.